Good morning, class. Today we will start with class 8, Geography chapter 4. The topic is agriculture, and class, this is our second lecture. And in this lecture, our first topic is types of farming. Types of farming. Let's see, in India, how many types of farming is practiced? So first, farming is practiced in various ways across the world, depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. The first one is subsistence farming. First one is subsistence farming. So let's see what is subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce a small output. Subsistence farming can be further classified into intensive subsistence and primitive subsistence farming. So basically subsistence farming का मतलब है कि जब कोई किसान जो है सिर्फ अपने लिए ही प्रोडक्शन करे और जो प्रोडक्शन हुआ है वो उसकी फैमिली के डिमांड्स को फील करने के लिए है, तो उसको क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. राइट डाउन सम पॉइंट्स. This type of farming is practiced. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmers' families. So subsistence farming is mainly done for the family members itself. So traditionally in this topic, low level of technology and household labors are used. So class, this is called subsistence farming. In subsistence farming is also divided into two groups. First one is intensive subsistence farming. So let's see what is intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming is basically done to meet the large population, to feed the large population of the country. So basically this type of farming is practiced to meet the large population of the country and high level and high level of
in intensive subsistence farming, more and more crop is produced to feed the growing population of the country, and modern equipments such as pesticides, insecticides, manures, chemicals are used to produce more crops. So this is called intensive subsistence farming. So class, our next topic is intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture में the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labors. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. So basically, what is intensive? Intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture. In this, farmers cultivate. Farmers cultivate a small plot of land using simple tools and more labors. So basically, in this type of agriculture, a small plot of land is using simple tools and more labors for growing more crops on that particular field. So basically, these crops need a climate with a large number of days. Need a climate with large number of days with sunshine and fertile soil. So in this type of agriculture, a large number of days is needed for cultivation and a proper sunshine and a fertile soil. In this, annually more than one crop is grown. Annually more than one crop is grown. So basically हम कह सकते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में एक छोटी सी प्लॉट ऑफ जो लैंड है उसमें हम बहुत ज़्यादा लेबर्स यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी मशीन्स का भी यूज करते हैं और वो एक ऐसे लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पे जो क्लाइमेट है वहाँ पे बहुत दिनों तक जो है गर्मी पड़े, क्योंकि सनशाइन हॉटनेस और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और वहाँ जो सॉइल है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। और इस सॉइल में हम क्या करते हैं, मोर देन वन क्रॉप, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, वी कॉल इट मिक्स्ड फार्मिंग। मीन्स ऐसे एरियाज में एक्चुअली फार्मर्स डू मिक्स्ड फार्मिंग टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप फ्रॉम द सेम फील्ड। So other crops including wheat, maize, pulses and oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. So basically ये जो intensive subsistence agriculture है वो उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मीन्स थिक पॉपुलेशन ऑफ जहाँ पे रहते हैं।
So basically these are the major points regarding the intensive subsistence agriculture. So let's see our next topic, primitive subsistence agriculture. So let's say class, what is primitive subsistence agriculture? Primitive subsistence agriculture. So basically in this type of agriculture, safety cultivation, shifting cultivation and nomadic herding is done. So आप सब जानते हैं कि what is shifting cultivation? Shifting cultivation is practiced on the mountain regions. And nomadic herding is practiced on mountains as well as in plains. So हम सब जानते हैं कि what is cultivation? Shifting one land of agriculture to another land of agriculture is called shifting cultivation. For example, shifting cultivation is practiced on the mountain regions of the world. So in this region, farmers grow a particular crop in a particular area, and after cropping for 1 year and 2 years, that particular farmers move to another agricultural land and they practice agriculture, and on that particular land this transformation of agricultural land is called shifting cultivation. So basically if we talk about nomadic herding, those people who move along with their herds of animals in search of fodder or pasture from region to region is called nomadic herding. So हम कह सकते हैं जो इंसान अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ घूमते रहते हैं सर्च में, इन सर्च ऑफ फॉडर एंड पैस्चर, वो अपने जानवरों के लिए चारे की तलाश में जब वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ, तो इस मूवमेंट को, इस सीजनल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? नोमैडिक हर्डिंग. सो बेसिकली दिस टू टाइप्स ऑफ agriculture comes under primitive subsistence farming, and primitive subsistence farming is for self consumption. So basically हम कह सकते हैं primitive subsistence farming is especially done for self consumption. So हम कह सकते हैं in many areas of the world, for example in India, most of the farmers are doing primitive subsistence agriculture, means वो अपने लिए ही फूड्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, नॉट फॉर सेल. सो इसको हम क्या कहते हैं? primitive subsistence agriculture. So let's see our next topic is shifting cultivation. So let's see what is shifting cultivation. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees by burning. So basically what is shifting cultivation? So a plot of land
is cleared by filling the trace and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. So let's see what is cultivation. A plot of land is cleared by filling the trays and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. So basically class हम कह सकते हैं in hilly areas, for example in India, the entire Himalayan region, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है और यहाँ पे जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं कि जो एक एरिया है अंडर वेजिटेशन, जो जंगल है उसमें से जितने भी पेड़ होते हैं उसको वो क्या करते हैं काट देते हैं. आफ्टर लेटिंग देम टू ड्राई फॉर 3 months, वो उस पेड़ को छोड़ देते हैं 3 to 4 months सूखने के लिए. उसके बाद वो क्या करते हैं उसमें वो आग लगा देते हैं. जैसे ही ये सारी लकड़ियाँ जल करके खत्म हो जाती हैं तो उससे जो राख बचता है उस मिट्टी में उस राख को वो मिला देते हैं. मिलाने के बाद उसमें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मेज, याम, पोटैटो एंड कसावा. सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा होता है. इसके बाद आफ्टर लॉसेस इज फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर्स मूव टू ए न्यू प्लॉट ऑफ लैंड. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज द स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आल्सो. इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वी कॉल आल्सो एज ए स्लैश एंड बर्न. Plus and burn agriculture. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम दो नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. सो बेसिकली क्लास after growing these crops, farmer moves to another land and practice the same activity. सो हम इसी प्रोसेस को कह सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. सो बेसिकली एक फार्मर जो है वो एक लैंड पे जब वो एग्रीकल्चर करते हैं, जब उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उस लैंड को छोड़ करके वो फिर एक दूसरे प्लेसेस पे मूव करते हैं, फिर वहां पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं. सो दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग. What is nomadic herding? So let's see what is nomadic herding. So it is practiced in semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herders move from place to place with their animals for fodder and water along
defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and the terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to herders and their families. So basically